नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और अब बाजार पे तेजी है। क्रेडिट पॉलिसी के बाद ये तेजी और बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन अब देखते हैं क्या ये जो लेवल्स हैं 8200 इसको अब कन्विंसिंगली होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। स्टिफ रेजिस्टेंस के बीच में अभी भी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सरेंडर होने के चांसेस कम ब्लीक हैं, यानी कि रिवर्सल के चांसेस अभी तक बाजार पर नहीं है। अच्छी तेजी सेटअप के हिसाब से आज निफ्टी फ्यूचर्स में लगभग 4% का इजाफा, यानी कि 8.5 लाख शेयर्स का स्ट्रॉन्ग बिल्डअप। साथ ही साथ कॉल्स के जो प्रीमियम है 83-84 की कॉल्स के वो लगभग 12-13% बढ़ते हुए नजर आए। और इसके अलावा पुट्स में आज राइटिंग है 8200 की पुट पे 17% आज प्रीमियम्स कम होते हुए नजर आए। ओपन इंटरेस्ट में स्ट्रॉन्ग इजाफा देखने को मिला, तो सेटअप स्ट्रॉन्ग है। और पिछले कुछ 10 मिनट में जो शेयर्स एक्टिव हुए हैं नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी के हैं, जैसे कि ऑफशोर कंपनी अबान ऑफशोर, साथ साथ सेलान एक्सप्लोरेशन, HOEC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एकदम से लाइमलाइट में और स्ट्रॉन्ग खरीदारी इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। लेकिन वायदा कारोबार का जायजा लेंगे उससे पहले क्रेडिट पॉलिसी जो आज मेन इवेंट था उसी पे बात करने के लिए इंद्रनील पंजी मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट IDFC से। इंद्रनील जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, कोई भी रेट में कटौती नहीं की गई, छेड़छाड़ नहीं की गई, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है? Definitely, this was our expectation that nothing will be changed in this policy, and we were clearly looking at the inflation which had come out on the higher side. The April inflation is also likely to be relatively higher at around 5.5-5.6%. So our call was that the RBI governor would possibly wait for the monsoon for a better view on the food prices and then only decide on whether there is a chance of a further reduction in the rates. But this policy we had actually not expected any movement from the Reserve Bank. लेकिन सर, अब आने वाले कुछ अगली पॉलिसीज पे क्या व्यू हो सकता है आरबीआई का, आप ये समझाएं, क्योंकि अभी भी आरबीआई गवर्नर का ये कहना है कि अगर मॉनसून बेहतर रहता है तो देयर इज अ चांस कि रेट में कटौती की जाए, लेकिन अकोमोडेटिव पॉलिसी है पर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं उसका रिस्क अभी बरकरार है सिस्टम में। तो गोइंग फॉरवर्ड कितनी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है आपको? I think the whole definition of the policy being accommodative is now shifted on to the liquidity side of the story, and this has been made pretty clear in the April policy, where he has shifted on to creating more permanent liquidity in the system and therefore ensure that the overnight call money remain close to the repo rate. The second thing, of course, what is very important now is the 150 basis points of repo rate cut that has happened. The full benefit of that has not really been translated to the real sector or the manufacturing sector. So the RBI will be clearly focused on a transmission of that repo rate cut to the real sector of the economy. And during the policy, during the press conference post the policy, he was very clear about the fact that he would possibly do a review of the MCLR and see how it is working, and hence take incremental measures in terms of the transmission mechanism. So the point that I'm trying to make is that rate cuts is not the only way for accommodation. Liquidity for the moment will become the way for the accommodation. Any further chance of reduction in the rates would be dependent on the monsoon, how food prices react, whether there are downward surprises in the overall inflation trajectory, and to a certain extent it will also depend on whether oil stays at 50, rises higher than 50, or actually comes back to the lows of the 25 and the 30. So a lot of variables are involved in the RBI decision at this point in time, and it would therefore be right to say that the policy that we saw today has made the incremental action or the next action of the Reserve Bank extremely data driven.